जंग का एक ही उसूल है, जंग का एक ही उसूल है और वो है जीत। May I assure you that we shall accomplish the same at all costs. Guys, these words came from the golden mouth of General Bipin Rawat, the first CDS of India and an extremely great personality. Yes, means एक भीड़ में से एक इंसान अगर अलग चमक के नजर आए तो उसको हम कहते हैं एन एक्सट्रीमली ग्रेट पर्सनैलिटी। बहुत सारे 6 में से 9 अलग नजर आता है, बहुत सारे कांच के टुकड़ों में से चमकता हुआ हीरा अलग ही नजर आ जाता है। यस, दैट सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी वॉज जनरल बिपिन रावत, द फर्स्ट पीडीएस ऑफ इंडिया, द फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड अ ग्रेट आर्मी वेटरन एंड अ ग्रेट ह्यूमन बींग। So we are going to discuss the much celebrated life of General Bipin Rawat, who is no more with us. But उनकी जिंदगी की जो स्टोरीज हैं, उनके सिखाए हुए लेसन्स हमेशा इस इंडिया के, इस कंट्री के, और सिर्फ इस कंट्री के नहीं, इस पूरे वर्ल्ड के यूथ को इंस्पायर करते रहेंगे। सो गाइज, टुडेज extremely special class is on the celebrated life of General Bipin Rawat. We will start just in 10 seconds. Just before that, I will switch on the live chat that is of extreme importance. बिकॉज लाइव चैट्स के बिना हमारी कोई भी क्लास, हमारे इंटरेक्शन के बिना हमारी कोई भी क्लास एक बेहतर क्लास नहीं बन सकती। और आज की क्लास को तो टुडे इज द स्पेशल क्लास ऑन द लाइफ ऑफ जनरल बिपिन रावत। सो यस, वी कांट मिस अ इंटरेक्शन in between the class. It's an emotional class. Okay, just give me 10 seconds. I'm just on the way of switching on the live chats. The live chats are on my screen. So guys, चलिए आज की क्लास के साथ, आज के सेशन के साथ, एक शॉर्ट एंड स्वीट सेशन के साथ शुरुआत करते हैं। लेट मी गिव यू अ शॉर्ट इंट्रो ऑफ माई सेल्फ। गाइज, आई एम सार्थक शर्मा। आई हैव मोर देन 2 years of teaching experience and I have been mentoring, I have been teaching students, I have been guiding them for their law entrance examination for the last 2 years. But for me, each day counts. So I will rather say that I have been teaching students for more than 700 days. I have more than 700 days of teaching experience. I have mentored more than 10,000 students in these 700 days. And under my mentorship, or rather, I will say that under my companionship, a lot of students have reached their target destination. उनकी target destination रहे हैं और वो law schools, वो law institutions where they aspired to be. And yes, right now they are the students of those prestigious institutions. Guys, you can join me on Telegram. The link of the Telegram group is in the description box. It's also on your screen. Sarthak Sharma, the legal game, is the name of the Telegram group where I will share the homework and the class notes when required. I will also share the schedule of my classes, and above them all, if you have any doubt in any particular concept of your legal reasoning section more particularly, then you can raise that doubt in this group and I will personally adhere to it. तो आपके डाउट सॉल्विंग के लिए आपके पास एक सबसे ज्यादा इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम, द टेलीग्राम ग्रुप सार्थक शर्मा द लीगल गेम। Guys, you can subscribe to Unacademy for either of the following term. And today is the birth anniversary of Unacademy, तो आज तो super duper offer चल रहा है। On every subscription of 1 year and above, you will get a free of cost 6 month subscription. And yes, extra 10% discount तो evergreen है ही, जो आपको मिलेगा if you will use the code SRT10. You can subscribe for 1 month, for 3 months, for 6 months, for 9 months, for 12, 18, or 24 months. And there's no cost EMI as well. So for those students who do not want to pay in lump sum, they can go for the no cost EMI offer. Okay, students, let's have a look over the unique features of Unacademy app. So yes, all the features cannot be showcased on one single screen, but these 6 are some among a lot more unique features of Unacademy. And due to these features, learning is made easier, effective, efficient, and interesting for all of you. The live quiz feature for the students is my personal favorite feature because here the students can not only participate in a quiz, they can also host their own quiz. So yes, host your quiz and help your fellow mates to grow their knowledge. I hope you are appearing for the weekly T20 tests and the Unacademy Law Aptitude Test. Unacademy Law Aptitude Test is conducted every alternate Saturday at 11 a.m. in the evening. तो आप इसको कह सकते हैं कि ये twice in a month conduct होता है. It is conducted twice in a month. It's a 60 minutes, 60 questions, 60 marks test.
exactly on the latest CLAT pattern. And weekly T20 test, the weekly T20 test is conducted every weekday. It's just a 20 minutes quick revision test for your everyday practice. There, from Monday to Friday, there are 5 different weekdays. Saturday and Sunday are counted in weekend. और English, Quant, Logical Reasoning, Legal Aptitude and General Knowledge. ये 5 sections हैं. So these 5 weekdays have particular, means each section is, does each weekday is designated to a particular section. Like Monday is for English, Tuesday is for quantitative, Wednesday logical reasoning, Thursday legal aptitude, and Friday is current affairs and GK. So a quick 20 minutes revision test विच यू शुड नॉट मिस. अपने दिन के 24 घंटे में से 20 मिनट जरूर निकाल लीजिएगा, बिकॉज दिस वीकली T20 टेस्ट एम्स टू बिल्ड योर कंसिस्टेंसी. एंड बिलीव मी, इन योर सक्सेस द कंसिस्टेंसी इज गोइंग टू प्ले द बिगेस्ट रोल. वो जो हमने हमें बचपन में कहानी सुनाई जाती थी खरगोश और कछुए की, इन विच वो कछुआ स्लो होने के बावजूद रेस जीत जाता है और खरगोश हार जाता है. वो इसलिए नहीं जीतता है क्योंकि वो स्लो था, ना वो इसलिए, ना खरगोश इसलिए, खरगोश और कछुए में स्पीड से दैट डजंट मैटर. मॉरल ऑफ द स्टोरी दैट इज टॉट टू अस इज स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. स्लो को हटा दीजिए. द स्पीड डजंट मैटर, वेदर यू आर स्लो और फास्ट डजंट मैटर. इफ यू आर कंसिस्टेंट, if you are steady, then you will win the race. So yes, the biggest role that will play in your success, the biggest thing that will play the biggest role, the major role in your success is consistency. और कंसिस्टेंसी को बिल्ड एंड बूस्ट करने के लिए वीकली T20 टेस्ट हम लेकर आए हैं. जस्ट 20 मिनट्स अ डे, 20 मिनट्स अ डे. कहावत है बूंद बूंद से सागर भरता है, तो ये 20 मिनट्स वो बूंद हैं जो आज से 6 महीने बाद आपके ज्ञान का सागर भर देंगे. एंड डेफिनेटली व्हेन यू विल बी सिटिंग इन योर एग्जामिनेशन हॉल, then these 20 minutes are going to make a big positive difference for you. The last thing that I need to remind, the special class features. I have always waited upon one single fact that YouTube से better platform है Unacademy special class platform, that is on Unacademy app. And special classes are also free classes, just like you are attending YouTube classes free of cost. आप Unacademy पे भी इन classes को attend कर सकते हैं just free of cost. Okay, to unlock any special class you can use the code SRT10. And due to these wonderful features that provides a better learning experience, the special class is a much better platform when we compare it to YouTube. चलिए, let's start today's class. So जनरल बिपिन रावत के एक बहुत ही खूबसूरत एक इंस्पिरेशनल कोट के साथ हमने इस क्लास की शुरुआत की. व्हेन ही सेड कि जंग का सिर्फ एक ही उसूल होता है और वो है जीत. एंड मे आई अश्योर यू दैट वी शैल विन इन एवरी सिचुएशन. जनरल बिपिन रावत का एक कॉन्फिडेंस उनकी इन बातों से ही नजर आता है. सो लेट्स start this class with the early life of India's first CDS, General Bipin Rawat. So he was born in Pauri. He was born in Pauri, Uttarakhand. उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था. पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में, इन अ विलेज इन उत्तराखंड इन द पौड़ी डिस्ट्रिक्ट on 16th of March 1958. And he was habitual to Indian Army because he hailed from a army family. ये एक मिलिट्री फैमिली से ही आते थे. He hailed from military family. इनके फादर भी एक आर्मी ऑफिसर थे एंड हिज फादर रिटायर्ड फ्रॉम द इंडियन आर्मी ऑन द पोस्ट ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल. सो हिज फादर वाज आल्सो एन आर्मी ऑफिसर. सो इनको बचपन से ही इंडियन आर्मी की आदत हो गई थी बिकॉज ही यूज्ड टू लिव विद हिज फादर एंड हिज फादर वाज एन आर्मी ऑफिसर. सो दैट्स व्हाई इनको बचपन से ही दिस फोटोग्राफ इज ऑफ कैप्टन of General Bipin Rawat along with his father, who was also an army officer. So yes, he hailed from a military family. उनका military career, let's take a look over his goosebumping, over his charming military career. He started his career in the Indian Army from the rank of, means इससे भी एक पहले rank होती है, from before the rank of lieutenant there is a rank of a second lieutenant. Okay, now what is a second lieutenant? Just like there is a president and vice president, बिल्कुल उसी तरह lieutenant का भी एक vice हुआ करता था, that was second lieutenant. So he started, the first rank that he got in the Indian Army was of second lieutenant. Second lieutenant में सिर्फ 1 star होता है. And from the rank of second lieutenant, he got to the rank of lieutenant, then he got
कैप्टन एंड देन ही गॉट मेजर। मेजर का मतलब है कि नेशनल एम्बलम आपके कंधों पर आ गया। द नेशनल एम्बलम इज ऑन योर शोल्डर्स नाउ। एंड व्हाट डज इट डिनोट? इन पुलिस में आईपीएस ऑफिसर से नीचे किसी भी रैंक के पास नेशनल एम्बलम नहीं होता है। Okay, the ministers have national emblem. The judges have national emblem on their chairs. The ministers have national emblem on their chairs. These are constitutional positions. Okay, आईएएस आईपीएस के पास नेशनल एम्बलम होता है। इंडियन आर्मी में मेजर से पहले किसी को नेशनल एम्बलम नहीं दिया जाता। What does it denote? If you have a national emblem associated with your job, then it means कि इस देश की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। The responsibility of this nation is on your shoulders. So he started his job, his military career with the rank of second lieutenant in the Indian Army. Then he was promoted to rank of lieutenant, then captain, then he became major. अब उनके कंधों पर इस देश की जिम्मेदारी ऑफिशियली आ गई थी बिकॉज ही वॉज अ मेजर इंडियन आर्मी. देन ही गॉट लेफ्टिनेंट colonel, then he became colonel, then he became brigadier, major general, then he got to the rank of lieutenant general, and finally he became general. फील्ड मार्शल की रैंक बहुत ही एक्सेप्शनल सिचुएशन में मिलती है. सो ये आज तक सिर्फ दो ही लोगों को मिली है, के एम करियप्पा एंड सैम मनिकशॉ. They are the only two exceptions who have got the rank of field marshal. Field marshal is a 5-star general. We will discuss about field marshal later on. So जनरल की रैंक पर he held two very big offices. Firstly, he was the chief of army staff, and later on he became the chief of defense staff, the first CDS of this nation. He was a 4-star general. General भी अलग अलग stars होते हैं. General can be 3-star also, but he was a 4-star general. 4-star general is the highest active position in the Indian Army. Highest active position in the Indian Army. So yes, his early life, his military career started from the rank of second lieutenant, and before going to the rank of second lieutenant, इनका एक इंटरव्यू की मुझे बात याद आती है. he cleared the when he cleared the written examination and he went for SSB interview. इनका SSB इंटरव्यू प्रयागराज में हुआ था, इलाहाबाद में. इनको वहां पर बुलाया गया था, एंड इन फ्रंट ऑफ हिम एक ये बहुत यंग यंग चार्मिंग और बिल्कुल जोश से भरे हुए बिपिन रावत एक यंग बॉय के सामने बैठे हुए थे कुछ ब्रिगेडियर एंड जनरल रैंक के ऑफिसर्स जो इनका इंटरव्यू लेने वाले थे. वहां पर इनसे पूछा गया दैट व्हाट आर योर हॉबीज. सो ही सेड दैट ट्रैकिंग इज माय हॉबी, क्योंकि मैं पहाड़ी हूं, पहाड़ों से ही आता हूं. ही हेड फ्रॉम उत्तराखंड. और आप काफी बार इन्होंने अपनी इस बात को रिपीट किया है कि मैं पहाड़ी हूं, मैं इतनी आसानी से मरूंगा नहीं. इवन इट वॉज अ स्टेटमेंट मेड बाय हिम रिसेंटली. सो इनसे पूछा गया दैट व्हाट इज योर हॉबी. सो ही सेड दैट माय हॉबी इज ट्रैकिंग. देन इनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था दैट अगर आपको ट्रैकिंग के लिए भेज दिया जाए पहाड़ों पर जंगलों में अकेले और आपसे कहा जाए आप सिर्फ एक चीज लेकर जा सकते हैं, देन व्हाट विल यू टेक. ही सेड ही आंसर्ड दैट आई विल टेक अ मैच बॉक्स. मैं एक माचिस का डिब्बा लेकर जाऊंगा. द ऑफिसर्स द ऑफिसर्स वर एस्टोनिश्ड कि तुम खाना लेकर नहीं जाओगे, माचिस का डिब्बा लेकर जाओगे. देन ही सेड कि खाना तो कभी ना कभी खत्म हो ही जाएगा, बट मैच बॉक्स लाइटिंग प्रोड्यूस करेगा. मैच बॉक्स विल प्रोड्यूस लाइट, और उस रोशनी के जरिए मैं अपने साथियों तक पहुंच सकता हूं. आई कैन रीच टू माई फ्रेंड्स, आई कैन रीच टू माई पार्टी, जहां से मैं जिंदा बच सकता हूँ. सो इनकी इस इंटेलिजेंस को, इनके इस इंटेलेक्चुअल आंसर को देखकर एसएसबी इंटरव्यू में ऑफिसर्स इतने खुश हो गए that he was selected, and finally he went to the Indian Military Academy, the prestigious IMA, and also he went to NDA. IMA and NDA से ये pass out हुए, and he was commissioned in the Indian Army. In which regiment? He was commissioned in the 5th battalion. He was commissioned in the 5th battalion of the 11 Gorkha Rifles. Remember guys, luckily इनको वही रेजिमेंट मिली जिसमें इनके फादर थे. 11 गोरखा राइफल्स में ही इनके फादर भी ऑफिसर थे. सो ही वेंट टू द सेम, ये बिल्कुल अपने फादर की लेगेसी को इन्होंने कंटिन्यू किया. ही कंटिन्यूड द लेगेसी ऑफ हिज फादर, एंड इन्होंने उस लेगेसी को और आगे बढ़ाया.
He was commissioned to the 5th battalion of 11 Gorkha Rifles. इसी बटालियन में, इसी यूनिट में इनके फादर भी हुआ करते थे, एंड आफ्टर हिज फादर ही वेंट टू इट. Okay, so we were discussing about these ranks: lieutenant, then captain, then major, the lieutenant colonel, colonel, brigadier, major general, lieutenant general, and general, a four-star general, which is the highest rank, highest active rank in the Indian Army. Now, what is this field marshal? Field marshal आज तक इंडिया में सिर्फ दो ही रहे हैं. There have been only two field marshals in India: K.M. Cariappa and Sam Manekshaw. Sam Manekshaw. नाउ व्हाट इज दिस फील्ड मार्शल? फील्ड मार्शल इज अ 5 स्टार जनरल, और ये बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में ये रैंक दी जाती है ड्यूरिंग वॉर सिचुएशन. जब हम किसी वॉर को लड़ रहे होते हैं, एट दैट सिचुएशन द फील्ड मार्शल रैंक इज फेलिसिटेटेड टू अ पर्सन. 5 स्टार जनरल होता है एक फील्ड मार्शल. जनरल बिपिन रावत वॉज अ 4 स्टार जनरल. ही वॉज CDS and he was the chief of army staff at this rank, at the rank of 4 star general. So फील्ड मार्शल के इक्विवेलेंट इंडियन एयरफोर्स में मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स रैंक होती है, और आज तक IAF में सिर्फ एक ही इंसान है इन द इंडियन एयरफोर्स जिनको फील्ड मार्शल के इक्विवेलेंट रैंक मिली है. इन इंडियन एयरफोर्स फील्ड मार्शल के इक्विवेलेंट जो रैंक होती है, दैट रैंक इज द मार्शल ऑफ द IAF, मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स. एंड देयर इज ओनली वन पर्सन टिल डेट जिनको मार्शल ऑफ IAF की रैंक मिली है, एंड दैट पर्सन इज अर्जन सिंह. Yes, it was during the Indo-Pak War. And in the Navy, the Admiral of the Fleet is equivalent to Field Marshal. And no single person till date in India had been felicitated with this rank. Navy में Field Marshal के equivalent जो rank होती है उसे आप कहते हैं in Indian Navy. The rank is Admiral of the Fleet. And no single person had been felicitated with it till date. आज तक किसी को भी Admiral of the Fleet की rank नहीं मिली है. ओके, सो यस, फील्ड मार्शल इज एन एक्सेप्शनल रैंक जो कि इंडियन आर्मी में इस वक्त एक्टिव नहीं है. द हाईएस्ट एक्टिव रैंक इज द 4 स्टार जनरल ओनली, एंड द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल इज नॉट एक्टिव एट प्रेजेंट. ओके, सो ये तो इनका एक्सेप्शनल करियर था. दैट SSB इंटरव्यू से ही पता चल गया. कहते हैं पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं. तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी चार्मिंग पर्सनैलिटी वहीं SSB इंटरव्यू से ऑफिसर्स को समझ में आ गई थी. देन ही वेंट टू IMA एंड NDA एंड 5th battalion. After passing out from IMA, he was commissioned to the 5th battalion of 11 Gorkha Rifles. Now let's डिस्कस इज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स, और इनकी लाइफ के मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स भी आप लोगों से शेयर करूंगा. सो इनकी सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट था कि IMA की पासिंग आउट परेड किसी ने देखी है? Have any one of you witnessed the IMA passing out parade? If not, then it's a must watch thing. If you cannot watch it live, तो एटलीस्ट इसकी YouTube पर जाकर या कहीं भी जाकर वीडियो जरूर देखिएगा. The passing out parade of IMA is in itself a big event. ये बहुत बड़ा इवेंट होता है. It's worth watching. And it is worth watching. Believe me guys, it's a goosebumping event. जब आप IMA की passing out parade देखेंगे ना, you will actually feel your goosebumps. And the first outstanding achievement जो यहाँ पर मिला, IMA की passing out parade में जो उस बैच का सबसे बेस्ट कैडेट होता है उसको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है. एंड गेस व्हाट, जनरल बिपिन रावत के बैच में ये स्वॉर्ड ऑफ ऑनर उनको मिला. ही वॉज अवॉर्डेड विद स्वॉर्ड ऑफ ऑनर. यस, ही वॉज अवॉर्डेड when he passed out from Indian Military Academy. Then during the passing out parade, he was awarded the Sword of Honor. तो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जो कि सबसे बेस्ट कैडेट को, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस जो कैडेट करता है अपने बैच में, उस कैडेट को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है. एंड ही वाज अवॉर्डेड विद स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, अ बिग अचीवमेंट फॉर एनी कैडेट. सो जनरल बिपिन रावत की एक्सीलेंस की शुरुआत इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होते वक्त ही हो गई थी. द फर्स्ट आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट. अपार्ट फ्रॉम इट गाइस, डू यू गाइस नो दैट he had done his graduation from DSSC Wellington.
the Defense Service Staff College, Wellington, and then he went to United States of America. He also graduated from US Army Command and General Staff College. यहाँ से उन्होंने इंडियन आर्मी में जाकर जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस एंड अपनी नॉलेज से बहुत बड़े बड़े रिवॉल्यूशंस वो लेकर आए, उस सब की नॉलेज उन्होंने यहाँ से गेन की. He went to Wellington and he graduated from there in the Defense Services Staff College, Wellington, and then he went to US Army Command and General Staff College. यहां से भी इन्होंने पढ़ाई की और इस सारी नॉलेज को लेके भारत वापस आ गए. इनका विदेश में मन ही नहीं लगा. इनको तो वापस इंडिया आना था और भारत माता को सर्व करना था. सो यस, ही वेंट बैक टू इंडिया. ही डिडंट सर्व द फॉरेन नेशंस. वो फॉरेन नेशंस गए, वहां से नॉलेज ली और उस नॉलेज को लेकर वापस इंडिया आ गए. ही केम बैक टू इंडिया और इन्होंने उस नॉलेज का इन्होंने भरपूर यूज किया इंडियन आर्मी के डेवलपमेंट में. अपार्ट फ्रॉम इट 2011 में ही वाज अवॉर्डेड विद डॉक्टरेट इन फिलोसफी बाय सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ऑन हिज रिसर्च इन मिलिट्री मीडिया एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज. मिलिट्री मीडिया एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में भी इन्होंने रिसर्च की थी और इस रिसर्च के लिए इनको पीएचडी की डिग्री, इनको डॉक्टरेट विच यू मे से एज पीएचडी अवार्ड किया गया था बाय द सीसीएस यूनिवर्सिटी. यहां पर इनके आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स खत्म नहीं हुए. he didn't only served humanity at the national level but internationally as well. इन्होंने सिर्फ अपने अपने सर्विसेज इंडिया में ही नहीं दी, भारत माता के लिए इन्होंने काम नहीं किया. he worked for humanity at international level as well. यूनाइटेड नेशन मिशन इन कॉन्गो. आई होप यू हर्ड अबाउट दिस इंसिडेंट. यूनाइटेड नेशन का मिशन चल रहा था कॉन्गो में और वहां पर इंडिया की तरफ से यूनाइटेड नेशंस के इस मिशन में जनरल बिपिन रावत भी गए थे. जनरल बिपिन रावत वॉज अ पार्ट ऑफ इट. एंड डू यू नो, वहां पर इन्होंने 7,000 से भी ज्यादा लोगों की जान बचाई इन दिस मिशन. मीन्स this great personality not only served in the Indian army, he also served humanity at international level. He also served humanity internationally as well. और जिसके लिए इनको एक मेडल भी मिला था. Yes, he had medals on his uniform. He has more than 25 medals in his military career which spanned for 4 decades. लगभग 40 साल का करियर था, उसमें इन्होंने 25 से भी ज्यादा मेडल जीते. एक आर्मी ऑफिसर को एक सिंगल मेडल जीतने में ही पूरी जिंदगी गुजर जाती है. एक आर्मी ऑफिसर को एक सिंगल मेडल मिलने में भी पूरी जिंदगी गुजर जाती है और इन्हें तो 25 से भी ज्यादा मेडल्स मिले. एंड दीज मेडल्स वर नॉट ओनली ऑफ नेशनल लेवल, इंटरनेशनल मेडल्स भी थे दैट वर अवॉर्डेड टू हिम बाय यूनाइटेड नेशंस. मींस such was the great personality of जनरल बिपिन रावत. अपार्ट फ्रॉम इट, ऑपरेशन पराक्रम मेडल इन्हें मिला. ऑपरेशन पराक्रम मेडल, यस यू कैन हैव अ फोटोग्राफ ऑफ दैट मेडल. ऑपरेशन पराक्रम मेडल इनको मिला. आप सभी को याद होगा कि 2001 में पार्लियामेंट अटैक्स हुए थे. आफ्टर दैट पार्लियामेंट अटैक्स इंडिया एंड पाकिस्तान के रिलेशंस काफी बिगड़ गए थे एंड बॉर्डर पे काफी टेंस सिचुएशन थी. उस टाइम पर इनकी जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी उसकी वजह से इंडियन आर्मी को बहुत फायदा हुआ और बहुत सारे इन्फिल्ट्रेटर्स एंड टेररिस्ट पकड़े गए और मारे गए. सो इस ऑपरेशन पराक्रम के लिए इनको पराक्रम मेडल से भी अवार्ड किया गया. ऑपरेशन ऑल आउट, अगेन ऑपरेशन ऑल आउट, द नेम इज इटसेल्फ सजेस्टिंग इट वाज अ वेरी ग्रेट ऑपरेशन दैट वाज स्टार्टेड, दैट वाज लेड बाय जनरल बिपिन रावत. ऑपरेशन ऑल आउट में कश्मीर वैली में आतंकवादियों को घुस घुस के मारा था इंडियन आर्मी ने. एंड दिस ऑपरेशन वाज लेड बाय नन अदर देन जनरल बिपिन रावत. ऑपरेशन ऑल आउट, यस, ही जस्ट सेड कि हम सबको ऑल आउट करके रहेंगे. सो दीज वर सम आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स. और मुझे इनकी लाइफ का एक किस्सा याद आ रहा है. जनरल बिपिन रावत was just going, means at that time he was the chief of army staff. वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, द हाईएस्ट रैंक इन द इंडियन आर्मी. इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकती. ही वॉज अ 4-स्टार जनरल एंड ही वॉज इन सिविल यूनिफॉर्म. ये सिविल ड्रेस में अपने एक फ्रेंड से मिलने जाते हैं जो कि आर्मी एरिया में ही रहते हैं. हिज फ्रेंड वॉज ऑल्सो एन आर्मी ऑफिसर.
सो ये उनसे मिलने के लिए उनके घर जाते हैं। घर आर्मी एरिया में होता है, इन द कैंट एरिया। वहां पर एक आर्मी का गार्ड इनकी गाड़ी रोक देता है एंड ही सेज के वेयर आर यू गोइंग, यू आर अ सिविलियन, आप यहाँ नहीं जा सकते हैं आगे, एंड गो बैक। सो जनरल बिपिन रावत कहते हैं दैट आई एम द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आई एम जनरल बिपिन रावत, मुझे जाने दो, आई एम द आर्मी ऑफिसर। बट वो पहचान ही नहीं पाता है जनरल रावत को और वो गार्ड उनको नहीं जाने देता है, वहीं रोक देता है। सो जनरल बिपिन रावत वहीं पर फंस जाते हैं बिकॉज ही वॉज नॉट इन हिज यूनिफॉर्म, नीदर ही हैड द आइडेंटिटी कार्ड कि वो उस ऑफिसर को बता पाए, और वो गार्ड उनको पहचान नहीं पा रहा था। देन फाइनली वो अपने उस फ्रेंड को कॉल करके बुलाते हैं बाहर। वो फ्रेंड बताता है उस गार्ड को दैट ही इज जनरल बिपिन रावत, द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। एंड देन वो आर्मी ऑफिसर बहुत सॉरी फील करता है। बट डू यू नो व्हाट जनरल रावत डिड? उनमें किसी भी तरह का एरोगेंस, किसी भी तरह की अकड़ या घमंड था ही नहीं। उन्होंने उस गार्ड की पीठ थपथपाई और वो उस गार्ड की ड्यूटी ड्यूटी पर मींस ड्यूटी की तरफ अपनी ड्यूटी पर अपनी ऑनेस्टी को देखकर इतना खुश हुए दैट उस गार्ड को प्रेस करने के लिए स्पेसिफिकली उन्होंने आर्मी कमांड को एक लेटर लिखा इन विच ही प्रेज दैट गार्ड। उन्होंने कहा कि वो गार्ड बहुत ही ईमानदारी के साथ अपनी जॉब को कर रहा है एंड ही शुड बी प्रेस्ड। ओके, सो दैट वाज द पर्सनालिटी ऑफ जनरल बिपिन रावत। सिविल ड्रेस में जब उनको एक छोटे से गार्ड ने रोका, तब उन्होंने गुस्सा नहीं किया, उन्होंने उस गार्ड की तारीफ की, उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा था। ही ऑलवेज सेड कि उन्हें सिर्फ एक ही कैटेगरी के लोग पसंद हैं, द ऑनेस्ट पीपल, द ऑनेस्ट पीपल। इंडियन आर्मी में इंडियन आर्मी इज द एपिटोम ऑफ ऑनेस्टी। जितने ऑनेस्ट लोग इंडियन आर्मी में हैं, पूरे दुनिया में कहीं नहीं हो सकते। So guys, these were the outstanding achievements, and yes, how can we forget? He was the first Chief of Defense Staff, the CDS. So इंडिया को इस रैंक की बहुत पहले से जरूरत थी बिकॉज आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, अगर हम इन तीनों की बात करें, सो ऑल थ्री आर द डिफेंस फोर्सेस, और इन तीनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। लाइक आर्मी इज फाइटिंग समवेयर जहां पर उनको एयर सपोर्ट की जरूरत है, तो एयर फोर्स को मदद के लिए आना पड़ेगा। हो सकता है कि वहां पर समुद्र हो या रिवर हो और नेवी के सपोर्ट की भी जरूरत पड़े। सो बट इन तीनों के हेड्स अलग अलग हुआ करते थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एंड चीफ ऑफ आर एयर फोर्स व कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑथोरिटीज। सो अगर आर्मी को नेवी की मदद चाहिए तो पहले आर्मी जाएगी डिफेंस मिनिस्ट्री के पास, फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वो बात आर्मी की रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगी इंडियन एयरफोर्स को, फिर इंडियन एयरफोर्स वापस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, फिर इंडियन एयरफोर्स से मदद जाएगी इंडियन आर्मी को। सो ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग चैनल हो गया था, और इमीडिएट हेल्प की जब जरूरत होती थी तो डिफेंस मिनिस्ट्री वाज नॉट एबल टू काउंटर इट, एंड दैट्स व्हाई इन तीनों का एक कॉमन हेड बनाया गया, दैट वाज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिनके अंडर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ये तीनों आती हैं। एंड इफ द आर्मी नीड्स द हेल्प ऑफ एयरफोर्स, देन सीधे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सीडीएस से बात बोलनी है, सीडीएस विल डायरेक्टली अरेंज इट फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स। सो that was the crucial position of the chief of defense staff, and the first CDS, the first chief of defense staff of India, was none other than जनरल बिपिन रावत। सीडीएस की पोजीशन ऐसा नहीं है, मींस अगर आप किसी भी डेवलप्ड नेशन में देखेंगे तो वहां पर आर्मी, नेवी एंड इंडियन एंड एयरफोर्स, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स एक ही इंसान के हाथ में होती है। लाइक इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो पूरी दुनिया पर राज करते हैं, यूएस की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक सिंगल पर्सन के हाथ में ही है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में ऐसा नहीं था until and unless the rank of CDS was introduced. Finally the rank of CDS was introduced and army, navy and air force ये तीनों अब एक ही अथॉरिटी के अंडर आ गए हैं। यस, सो जनरल बिपिन रावत की एक और आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है दैट ही इज द फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया। अपार्ट फ्रॉम इट गाइस, 8 दिसंबर 2021 को एक बहुत ही ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ। MI-17V5 हेलीकॉप्टर में जनरल रावत, उनकी वाइफ और उनके साथ 11 और आर्मी के ऑफिसर्स, दे वर ट्रेवलिंग, they were heading towards their destination, बट बीच में ही उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है। एंड अनलकीली आउट ऑफ all the people who were on board on that helicopter, उन सब में से सिर्फ एक आर्मी ऑफिसर
सरवाइव कर पाते हैं, बाकी सभी की डेथ हो जाती है, इंक्लूडिंग जनरल बिपिन रावत। Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर्स रशिया से हम लोगों ने 2011 में फर्स्ट टाइम लिए थे, एंड यस दे हैव बीन टेकन फ्रॉम रशिया, एंड मोर देन 60 नेशंस आर यूजिंग दीज मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स इंक्लूडिंग इंडिया। सो Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर, जिसकी क्वालिटी पर कभी कोई शक नहीं किया जा सकता है, अनलकीली ये ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ, एंड यस इट्स एन ओल्ड सेइंग कि होनी को कौन टाल सकता है, तो शायद उनकी लाइफ का एंड ऊपर वाले ने इसी तरह लिख रखा था। ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर, ही लिव्ड लाइक अ वॉरियर एंड ही डाइड लाइक अ वॉरियर। सो और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, आज से 6 साल पहले भी इनके साथ सेम इंसिडेंट हुआ था। 6 years बिफोर इनका ये ही वॉज हेडिंग टुवर्ड समवेयर इन द नॉर्थ ईस्ट, और इनका चॉपर क्रैश कर गया था, बट एट दैट टाइम ही सर्वाइव्ड। और सर्वाइव होने जिंदा बचने के बाद जब इनका इंटरव्यू लिया गया, एट दैट टाइम ही वॉज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सो इन्होंने एक ही बात कही कि मैं पहाड़ी आदमी हूं, इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। सो यस इट वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम, 6 years बिफोर भी इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। So guys, that was the great life of the CDS जनरल बिपिन रावत, his glorious life। और कहते हैं कि जिंदगी में एक ही दिन में ऐसा काम कर जाओ कि 100 साल की जिंदगी जरूरी नहीं होती, एक दिन में ऐसा काम कर जाओ कि अगले 100 साल तक लोग आपको याद रखें। सो जनरल बिपिन रावत ऐसा काम करके गए हैं, he had served this nation so well, and all the services of his nation were without anything he wanted in return। इन्हें बदले में कुछ नहीं चाहिए था, सेल्फलेस सर्विस। सो इनकी सेल्फलेस सर्विस को हमारा देश और आने वाली जनरेशंस युगों युगों तक, मीन सालों तक याद रखेंगी। सो यस, at the end of this class I will just pay a tribute and a salute to General Bipin Rawat, the first CDS of India and a big reformer in the Indian Army. Guys, with this, we are coming to the end of this class. And before ending, first of all, let me inform you that today is the birth anniversary of Unacademy. 6 months free subscription on every 1 year and above subscription is there. And it is only valid for today. तो लास्ट के 3 घंटे बचे हैं इस ऑफर को, इट्स अ नाउ और नेवर ऑफर। इस ऑफर को अवेल कर लीजिए, अदरवाइज इट विल एंड एट 12 AM in the midnight when the calendar will turn to 11th of December. You can use the code SRT10, that will give you an additional 10% discount. The subscription offer, yes, this offer is specifically for CLAT category or law entrance examination. If you will subscribe for 9 months, then 3 months free of cost subscription milega, and this offer is also valid till midnight today. And yes, the SRT10 code is available here as well. Tanmay Singh, thank you sir for glorifying his life so well and providing such important info. That's great Tanmay. We hope that हम इन्हीं के दिखाए हुए पद चिन्हों पर आगे बढ़ेंगे। यस, वी विल सर्व द नेशन एंड इट्स पीपल जस्ट लाइक जनरल रावत डिड इन हिज wonderful life, in his celebrated life. Curated test for CLAT at 6 p.m. every evening, Tuesday, Thursday, and Saturday. These teachers will come up with the curated test, and 6:30 would be followed by analysis and feedback sessions. It's a must-watch session that you should not miss. And guys, एक बहुत बड़ा announcement. Indian Penal Code 1860, it is an inseparable part of any law entrance examination as well as judiciary service examination. So दोनों के लिए ही it is just like एक तीर से दो निशाने। मैं दोनों ही कैटेगरीज के लिए एक सिंगल क्लास लेकर आया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्लास आईपीसी खल्लास, द इंडियन पिनल कोड, हम एक सिंगल क्लास में फ्रॉम एवरीथिंग, फ्रॉम टो टू हेड, शुरू से लेके एंड तक जो भी क्रूशियल है, जो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, उसको हम कंप्लीट करेंगे इन जस्ट वन सिंगल क्लास। द डेट इज 15th of December एंड द टाइम इज 8 PM। तो ताकि आपको याद रहे, मोबाइल में अलार्म लगा लीजिए, रिमाइंडर लगा लीजिए, और रात 8 बजे 15 दिसंबर को मुझसे मिलिएगा ऑन द अनअकैडमी ऐप। The legal source, it's a freshers batch for CLAT 2023 that had been launched today at 10th of December. It's a bilingual course. It's a 1 year program, and bilingual हमने इसलिए रखा है because at present the youth in India is the youth in India, उनमें सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड लैंग्वेज है इंग्लिश। ना तो वो इंग्लिश रही, ना ही वो हिंदी रही, वो इंग्लिश हो गई है ड्यू टू दिस इंस्टाग्राम फेसबुक, इन्हीं का जमाना है, हम चैटिंग भी इंग्लिश में ही करते हैं। सो यस,
A टीचर में टी का मतलब क्या होता है? जस्ट लाइक आई टोल्ड यू दैट अन अकेडमी में यू स्टैंड्स फॉर यूनिकनेस, सिमिलरली द टी इन टीचर स्टैंड्स फॉर ट्रांसलेटर। एक टीचर का काम है ट्रांसलेट करना मुश्किल चीजों को आसान भाषा में। And yes, with this objective, we have come with this English batch. We will teach you in the language which is more, which is most easily understandable to you. Phoenix batch for this, it's a 6 months batch for CLAT 2022. 6 महीने ही रह गए हैं CLAT में. It's also a bilingual course and had been launched just 2 days back on 8th of December. There is no backlog of syllabus right now, so you may enroll for it. ओके ओके सर, वी विल अटेंड सर। कॉन्ट्रैक्ट, तन्मय कॉन्ट्रैक्ट लॉ के ऊपर मैं सिमिलर ऐसी क्लास ले चुका हूँ। यू कैन अटेंड दैट क्लास, यू कैन वॉच दैट क्लास इन अ रिकॉर्डेड फॉर्मेट। इट वाज एक क्लास कॉन्ट्रैक्ट लॉ class. The class is available on my Unacademy profile link, so you can go there and watch that class. Bugs Bounty, if you find any inappropriate thing in our classes, you can report it using the link in the description. My profile link is also in the description box. Thank you guys. Bye bye. Have a great day. The day is already over, so have a good night's sleep and have a great future ahead. Finally, before ending, I will again pay my heartiest tribute to General Bipin Rawat, who was obviously a gem personality. He was a gem among the masses. He was a charming, a glooming personality. वो कांच के बहुत सारे टुकड़ों में वही हीरा थे जो दूर से ही चमक में आ जाते थे. Okay, guys, with this, bye bye. I will meet you soon again. Till then,